अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अभी पाकिस्तान से मार खाने का मज़ा हिंदुस्तान को पूरी तरह शायद नहीं आया। उसने इलाके में और लोगों से पंगे लेने शुरू कर दिए हैं। 3 दिन पहले की बात है, जैसे मैंने रिपोर्ट किया था, और वही है कि चाइनीज़ आर्मी जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो 20 किलोमीटर जो है वो अंदर आ गई हिंदुस्तान के, और उन्होंने 20 किलोमीटर का एरिया जो है, कोई 100 मीटर नहीं, 200 मीटर नहीं, 20 किलोमीटर का एरिया जो है उसको कैप्चर कर लिया और हिंदुस्तानी फ़ौज को वहाँ से पुश करके पीछे कर दिया। अच्छा, अब जो इंडिया है उसके वो बांग्लादेश से भी प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, उनके नेपाल से भी प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। और बांग्लादेश से बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि 7 रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं हम, और वो चिकन स्नैक है क्योंकि बड़ी पतला एक कॉरिडोर है जो अगर कोई उसको कब्जा कर ले तो वो 7 रियासतों का काबिज हो जाएगा। और उनको लगता है कि बांग्लादेश और चाइना जो है, इन दोनों की नज़र है यहाँ पे। तो चिकन स्नैक के ऊपर जो एरिया है वो बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश वहाँ पे एक पोर्ट भी बनाने की कोशिश कर रहा है, एयरपोर्ट वगैरह और एयर बेस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना उसकी मदद कर रहा है, और शायद पाकिस्तान भी उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है उसमें। तो इसके ऊपर काफ़ी वावेला हो रहा है, और वहाँ पे अब बांग्लादेश बॉर्डर पे इंडियन ट्रुप्स ने मूव भी करना शुरू कर दिया, और टेंशन्स हैं विद इन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में है, बांग्लादेश की हुकूमत उनको मांग रही है, इंडिया उनके हवाले नहीं कर रहा, एंड यू नो दैट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारे साथ आज बड़े स्पेशल गेस्ट हैं मेरे पास, स्पेशली बांग्लादेश के 3 ऐसे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं जो कुछ अर्सा पहले जब बांग्लादेश में स्टूडेंट अपराइजिंग थी उसके वो सेंट्रल फिगर्स थे, कलीदी किरदार थे तीनों, पहले भी मेरे शो में आ चुके हैं। आज ये तीनों मुझे ढाका से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कल हमारी कोलीग हैं सफीना खान, लंदन में होती हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि लंदन में एक बड़ा एफ्लुएंट डायस्पोरा है बांग्लादेश स्टूडेंट्स का, बांग्लादेश नॉन रेजिडेंट यानी उनके सिटीजन्स का वहाँ पे, तो उनसे भी ज़रा बातचीत करके मुझे ये बताएं कि अब जो ओवरसीज़ रेजिडेंट्स हैं बांग्लादेश के, वो लोग कैसा फील कर रहे हैं इस डेवलपिंग सिनारियो के ऊपर। तो फिर मैं इन स्टूडेंट्स के ऊपर आऊँगा, बट पहले सफीना प्लीज़ लेट मी नो, आपने क्या कल से आपको पता चला है वहाँ पे? थैंक यू सो मच आपका। मैंने जब आपने कहा तो मैंने यहाँ की नर्व्स जो है वो पल्स चेक करने की कोशिश की। हमारे बहुत सारे बांग्लादेशी बहन भाई थे, उनसे मैंने बातचीत की, तो वो यही कह रहे थे कि शायद अब भारत से जो भारत है वो पाकिस्तान से तो मार खा ली है, अब वो हमें कमजोर समझ रहा है, तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा सा इधर से छेड़खानी कर लेते हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा अपना रोब शोप दिखा के दुनिया को बता सकेंगे कि हमारे अंदर भी जान है। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ जो इंडियंस पकड़े गए हैं वो हमारे जो फोर्सेस के पांव पकड़ते हुए, उन्होंने खुद वो तस्वीर मुझे दिखाई भी, और वो शायद आप भी वो फुटेज में देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि किस तरह से मिन्नत समाजित कर रहे हैं हमारे, और बल्कि उनका ये भी तो कह रहा था हम भी आप लोगों की तरह मुसलमान हैं और हमारे अंदर भी वही शहादत का जज्बा है जो आप पाकिस्तानियों के अंदर है, तो हमारे अंदर भी वही जज्बा है। अगर भारत ये कोशिश करेगा कि जी हमें डरा लेगा या हमारे कुछ बॉर्डर्स को हीट अप करके वो ये कोशिश करेगा कि हम डर जाएंगे और कुछ छोटा मोटा हमें नुकसान पहुंचा के वो इंटरनेशनली अपनी फेस कवर करना चाहता है, अपनी फेस सेविंग करवाना चाहता है, तो कहते हैं यहाँ से बांग्लादेश से तो वो उनको ये सहूलत मुयसर नहीं होगी, हम उनको डबल ट्रिपल तरीके से जो है वो जवाब देंगे। यहाँ के लोगों का जो जज्बा है वो बड़ा मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा हाइपर हुए हुए वो लोग। पाकिस्तान को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी चाहते हैं कि भारत अगर कोई भी किसी भी किस्म का बुज़दिलाना कार्रवाई करता है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, तो उनकी जो अफवाज है वो उसका 1000% ज्यादा जवाब देगी। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के साथ हम कुछ ऐसे मुआहदे कर रहे हैं जिसकी वजह से भारत जो है वो पैनिक हो रहा है, तो भारत चाहता है हमें अंडरमाइन करना, हमें प्रेशराइज करके वो शायद उन चीजों से रोकना चाहता है, ताकि जो है बांग्लादेश मेजर स्टेप जो लेने जा रहा है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, उनसे रुक जाए। अच्छा सफीना, मुझे एक बात की प्रॉब्लम है, मुझे प्लीज एक बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि आई हैव प्लेड विद सम बांग्लादेश प्लेयर्स, ब्रिज भी, क्रिकेट भी, एंड आई नो सम बांग्लादेशी पीपल, बड़े अकोमोडेटिंग होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बड़े दे आर वेरी स्वीट, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो वो आप उनको दबा नहीं सकते, यू नो दे विल स्टैंड अप टू यू अगर आपने उनको दबाया तो। ये आई मीन ये समझ नहीं आ रही इंडियंस को। You describe them very well. Past 25 years I have been watching them honestly. They're very polite, they're very
like soft spoken. They're not very like aggression like But you up and can't run down. over और them. बड़ी soft They are very soft लोग हैं, firm. बहुत soft लोग हैं. Yeah, बहुत सॉफ्ट लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन मैंने उनको जो अभी पाकिस्तान के साथ जंग हारने के बाद जो देखा है मैंने, उनका जज्बा वो मैंने पहले नहीं देखा है। ये आपने बिल्कुल उनको छोटी-सी लाइन में सम अप करके समराइज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत, बड़े ही स्वीट, बड़े ही वेल स्पोकन, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। वो लड़ाई-झगड़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन ये जो इंडिया-पाकिस्तान की टेंशन हुई और पाकिस्तान ने जो मुँह तोड़ जवाब दिया, देखिए भारत ने जो करना है वो तो पता नहीं क्या कर पाता या नहीं करता। एक्चुअली बांग्लादेश का भी एक बर्थ हुई है। अभी बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर लोग मैसिवली खुश हैं कि हम लोगों की जो नई गवर्नमेंट आई है, दे आर वेरी डिफरेंट रादर देन जो पास में गवर्नमेंट्स रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो पास की हमारी गवर्नमेंट थी वो ज्यादा प्रो भारत थी। अब हम अपने फैसले आजादी के साथ कर सकते हैं, हम अपने मुल्क की पॉलिसीज को अपनी इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, जिसको चाहे हम ऑन बोर्ड लो ओके, ले सकते वो हैं तो और ठीक जिसका है, नहीं ये ले तो हो गई सकते। पॉलिटिक्स. बट सफीना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आप सफीना खान की बातें सुन रहे थे और जो लंदन में स्पेशली बांग्ला रेजिडेंट्स हैं उनके मतलब आप बात सुन रहे थे. मुझे बांग्लादेश से ज्वाइन कर रहे हैं अरमानुल हक, शीमा अख्तर और जनातन नईम. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम टू ऑल थ्री ऑफ यू. शीमा, मुझे ये अब कि वी आर गेटिंग न्यूज़ ओवर हियर, कॉन्स्टेंट न्यूज़ अबाउट ग्रोइंग or building tensions on the borders. Is it really so, or it's just in the news? Uh, Firstly, Assalamu alaikum. Walaikum salam. I'm Shima Akhtar. Yes. I'm studying music at University of Dhaka. Chicken neck, our border is not very good. It is some kind of vulnerable right now. We can say that, when July uprising happened after Awami League's fall, then the Indian government supported Awami League, somehow they supported, and they are the side of Awami League's government. Then it is some kind of we don't want any appeasement or so. What was the question? Basically, what is the tension on the border? Are you threatened by India? We are not threatened. Okay. It is, But are you feel aware of the threatened fact when that there is a rising? Are you aware of the fact that there is a rising tension between India and Bangladesh Yes, troops? yes. India somehow trying to say that we are wrong somehow. Their media and online medias are wanna tell that Awami League government was better. Okay. Awami League government. So it is basically in was support of more Hasina affiliated to Wajid them. and all. Hello. Basically, it is in support of Hasina Wajid. That is what you're saying. Yes, yes. Okay. Let me come on to Arman. Arman, Assalamu alaikum and thank you for joining us. What can you add on to whatever Shima has told us? Yeah, actually we are threatened because our league was fully supported by India. We know that. Though our foreign policy was friendship to all, balance to none. But after 1971, we are seeing that, we have been seeing that our foreign policy is based on India. They are trying to make sign with them, like our our Farakka path, that means Farakka Tikka path, and so on. So they always try to dominate us with the help of Awami League.
they were suppressing us. But the 2024 July uprising, it stopped completely. After July uprising, that means 5th August, they tried to infiltrate their people, their armaments, their military. But we managed somehow. We have a new government here, Dr. Yunus government, interim government, and they somehow managed this attack, this military infiltration. But border killing is ongoing. Border killing in 2024. In 2024, they killed just 28 people in our border. That means BSF killed 28 people killed. So it's ongoing. And nowadays we are seeing that they pushing their people or at Mizoram border, at Mizoram border or and our other border areas like our North Bengal borders and other border areas. They are pushing their people and they're trying to engage war with us. And you know that our Myanmar issue is very crucial here because our interim government is trying to give the new corridor for Myanmar, and we know that it also a policy for USA, and UN even pushed the decision. We need to give our corridor border. So we are threatened actually by India, and we are trying to engage with Pakistan. And I believe that friendship to all, Malays to none. We need to engage with Pakistan, Nepal, Bhutan, India, because India is surrounding us. They are the biggest country who share the border with us. So we need to make friendship to all, not फेयर इनफ। not going शीमा, to जब आप war आखिरी बारी with आई anyone. थी तो आप थोड़ा थोड़ा उर्दू बोल रही थी। इज इट ऑल राइट अगर मैं उर्दू में बात करूं? उर्दू में मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ। ओके गुड। ये मुझे बताएं कि इंडियन मिनिस्टर ने कहा कि गॉड फॉरबिड हम बांग्लादेश के 3 टुकड़े कर देंगे, उसको 3 पीसेस में कर देंगे। बांग्लादेश के लोग इसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? Can you tell me again? He said that we Who will told break this? Bangladesh into 3 portions, 3 pieces. How Who do said? the one Indian minister, he said that. So how do Bangladesh people look at such statements? We will tell them that we don't want any war, And or Bangladesh does not want to be dragged into India-China or India-Pakistan hostilities. Our foreign policy is guided by the line that friends to all, Malays toward none. Bangladesh supports peaceful multipolar regional cooperation like SARC, BIMSTEC, BCIM. We aim to be bridge, not a battleground. So we want regional integration that respects our sovereignty. fair enough. But having said that, India is trying to impose war on you. We don't support war. We have faced it in 1971 and I know. What I'm saying is that what if somebody imposes it on you? Then what do you do? Obviously, you will retaliate. we will have to defend our country. And Arman, what can you tell me about this area, Chicken's Neck? I mean, how sensitive is this area? Of course, this is a very crucial area for us because not for us, because for India, because they chicken neck. This is
the point for Nepal, Bhutan, China, and Bangladesh. So this is the only way to go to Seven Sisters. So this is the only way. So if it is militarized, it is attacked by any other country like China, Bhutan, Nepal, or Bangladesh, especially Bangladesh, because this is our very important place. So they can be divided into two parts: Seven Sisters and other parts like 21 states and other 7 states. So this is very important for India, and their transportation, their communication, their military engagement. All the things are going by this area, and this is so short. Actually, just 22 kilometers. But this is very crucial What for is that India. called? Silly And corridor or what? It's called Silly corridor, right? and Shiliguri corridor. Shilimini corridor, right? Shili corridor. Yeah. Yeah. Shiliguri corridor. Yeah. And this is also good for us because we can negotiate. But do you see any uprising over there? India with this. Arman, I understand that there is uprising in Nagaland, Arunachal Pradesh, Himachal, and other areas. Are you aware of any uprising that the Indian government is facing over there? Actually, in Assam, Assam. Nagaland, Yeah. yeah, Assam. So they are trying How strong to is that? liberate them. They are trying to liberate them. 60 or 50 years ago, they started their insurgency, their liberation war, but and we know that they have already a insurgent group and liberation force back in 1950s. So, but and we know that in 2019 they tried to eliminate their citizenship with the help of NRC. Yeah, you know that NRC. So we protested against NRC when they are trying to eliminate their citizenship. So they always try to uh, suppress Assam, Tripura, and other states because always they can't walk on their ways, walk on they can't decide their own decision because they always try to liberate They are themselves. suppressed, you So mean? this is big tension for But India. correct my geography. I'm very weak in geography. So correct me. Is it not right that Assam is actually a part of Bangladesh originally? Yeah, we shared our culture. You can remember our Maulana Bashani's speech. Uh, he he told us that the Assam, the Bengal, West Bengal is together, all together. We will make a new Bengal, new land. This is Bengali land. Assam is part of us. He tried to tell this, and we feel that because our Bengali language is I related to remember that Assamese speech by language. Maulana Bashani. I've read it. I remember that speech. You're right. He was the first one who mentioned that. आप हमारे साथ ही मौजूद हैं शीमा अख्तर, अरमान उल हक और जनातन नईम. आई होप जनातन से रब्ता हो गया क्योंकि पिछली बारी उनसे रब्ता नहीं हो रहा था. शीमा मुझे एक बात बताएं कि चाइना, नेपाल और बांग्लादेश इनकी दोस्ती इंडिया को अच्छी नहीं लग रही है. अब इसका क्या इलाज है? हाउ डू यू डील विद दैट? First of all, India has always dominated us. Like we have a government which is fascist government, and that government is literally gained power by the Indian government, you know. And
we have suffered a lot that border killing, like our dams, like Farakabad. So we have seen that India is like always gonna be our big brother, or India wants to dominate us because it is their foreign politics that suppress us, and uh, they tell us that they keep telling that India is our friend, but this is a wrong bonding that we always lose in everything. So I want to say that we want to develop the relationship between Pakistan, China, and Nepal, Myanmar also, so that our a little country that can develop, and we don't want to get into some hostilities like India, Pakistan, India, China war. We don't want war. Our Bangladeshi foreign policies not does not support war. Fair enough. Arman, but the issue of seven sisters, like beginning from Assam and Nagaland, is growing on a daily basis, and it is practically on your borders. The Bangla troops and Indian troops had a skirmish over there, a serious skirmish. Do you think it has the potential to break out more from there? I think uh, our interim government, that means our caretaker government, is trying to communicate with other superpower like hegemon, USA hegemon, and other countries, Western countries, and other. They try to balance the power, and I think it won't be broken out. And we won't engage with the war, Indian border wars. So yeah, I'm hopeful. Actually, we are threatened by India, but I think our government, our interim government, can protect us because our foreign But policy is Indian government does not international. recognize your government. Yeah. They do not recognize your government. Okay, they don't recognize our government, but they couldn't attack us Yeah, yeah. after 5th August. Yeah, they couldn't attack us because we are uh, trying to engage with the other parties like USA, UK, China, Russia. We because we are the small country. We don't have any military power. We don't have any nuclear power. We want to survive it. That's why we are uh, at first we are engaged with the India in full state, but now we are trying to other parties, other multiple countries, multiple superpowers. We are trying to engage. We're trying to communicate with them. That's why I'm hopeful that we are not engaging any war at all. I'm hopeful. Jonathan, thank you very much for joining us and welcome to the show. Before you joined in, we are talking about Assam, Nagaland, Manipur, and other states and the rising tension over there. And also, a few days back, the tension between the Indian and the Bangladeshi border police or the forces on the border over there. How do you look at this situation? Do you think it has a potential to escalate from here or will it be controlled? Okay. Assalamu alaikum and Walaikum very salam. good afternoon, all of you. Actually, why the chicken snake is insecure for Bangladesh, I want to say about it, and I want to talk about 6 topics of it. If you please give me some time. Yeah, talk about it. Okay.
Okay. First one is high military sensitivity. The chicken snake is India's lifeline to its northeast and any threat to it, especially from China, India to militarize the control in the region, and the conflict breaks out. The region near Bangladesh becomes heavily militarized. Okay, and increasing risk of cross-border incidents. And second is Bangladesh caught between two powers. China and India are strategic rivals, and Bangladesh maintains a good relations with both. But the chicken snake is a flashpoint where these two powers converge. If tension escalates, Bangladesh could get caught in geopolitical pressure, forced to pick sides, or lost neutrality. And third one is restricted regional movement. Bangladesh is physically blocked from direct land access to Nepal and Bhutan by this narrow Indian Strait. It has to rely on India for regional trade routes, and if the corridor is threatened or restricted, Bangladesh regional connectivity suffers. And fourth, dependence on Indian transit routes. You know, Bangladesh has agreements with India for road and rail across to Nepal and Bhutan, and for Indian goods to pass to Bangladesh. However, the strategic fragility and the chicken snake means Indian tightly monitors and controls movement. Bangladesh economic ambitions can be slowed if India actually tightens this flow due to external threats. And last topic is about geopolitical vulnerabilities. Okay. If India Right, Jonathan. I think we are running out of time over here, but Jonathan, thank you for joining us. Arman and Shima Akhtar, thank you very much for being with us today. आपको मैं बताऊं कि आप देख रहे हैं कि एक डेवलपिंग स्टोरी है। पाकिस्तान से मार खाने के बाद पाकिस्तान जो है वो अब इलाके में कहीं ना कहीं जाता है, और मोदी चाह रहा है कि कोई ना कोई उसको ट्रॉफी मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, मेडल मिल जाए, जिसको अपने गले में डाल के बिहार के इलेक्शन में चला जाए और किसी तरह जीत जाए, क्योंकि हर रोज़ हिंदुस्तान को सुबकी का सामना है। खुद इंडियन एयर चीफ ने आके एडमिट कर लिया कि उनकी प्लानिंग जो है वो बहुत नाकिस है और वो पाकिस्तान के मुकाबले की नहीं है। और उन्होंने एक ऐसे फंक्शन में ये बात की कि जबकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने उनको इशारे करके ये बात की। इंडिया के एयर चीफ ने कल क्या बात की, ये काफ़ी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं बीजेपी के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी कारी ज़रबें लगाई हैं। बीजेपी का मतलब है कि नरेंद्र मोदी और वो एक ही जमात से हैं। अब ये एक ऐसी बात है कि आप समझे कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग के हैं, और ख्वाजा आसिफ भी मुस्लिम लीग के हैं, और ख्वाजा आसिफ जो है मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ये कारी ज़रबें खुदा न खास्ता लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे 5 राफेल गिराए। उन्होंने कहा चाइना ने पाकिस्तान को अच्छे जहाज़ दिए, राफेल भारत के लिए अच्छे नहीं थे। उनमें क्या करप्शन हुई, क्या करप्शन हुई, वो मोदी के होते हुए तो तहकीकात हो नहीं सकती, क्योंकि होने नहीं देगा। राजनाथ जी, आपको मैं एक बात बताऊँ, 5 नहीं आपके 7 जहाज़ गिरे, और मिराज 2000 भी गिर गया एंड में। स्वामी जी सॉरी, ये मिराज 2000 भी आपका गिर गया एंड में। और जो इज़राइल का ड्रोन था हेरॉन, वो उनके अलावा है, 7+1 है। तो आपको बताऊं अभी भी आपको 5 का जो फिगर है वो सही नहीं है। और राफेल बहुत अच्छा जहाज़ है स्वामी जी, फ़र्क ये है कि उड़ाना किसने है,
उसकी ट्रेनिंग किसने करनी है और दीगर सिस्टम्स उसको इंटीग्रेट किसने करना है, वो आप लोगों की काबिलियत नहीं है। लेकिन राजनाथ जो हैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, उनका वॉर हिस्टेरिया जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। अब उनको जिससे पहले मेजर गौरव आर्या को ख्वाब आते थे, अर्नब गोस्वामी को आते थे, इस तरह के और लोगों को आते थे, अब राजनाथ सिंह को आना शुरू हो गए हैं। कुछ नेवी के बारे में कह रहे हैं। सॉरी राजनाथ जी, नापाक तो आप हैं और आपके इरादे हैं और आपके ख्यालात हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाक हैं और हम पाक ही रहेंगे क्योंकि हम कलमा को हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि आपकी बड़ी गलत फहमी है। आपको अपनी सेना की तारीफ़ करनी है, अपनी फ़ौज की तारीफ़ करनी है और हाथ में आप कागज़ पकड़ के जो आपको लिख कर दिया हुआ है वो आप पढ़ रहे हैं। आप अपने दिल से बात ही नहीं कर सकते, आप खुद सोच के बात नहीं कर सकते, हालांकि आप डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर आप 3 मिनट की अपनी सेना के लिए तकरीर नहीं कर सकते तो आप में कितनी काबिलियत है या आप कितना सच बोल रहे हैं। आप वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो आपको लिख कर दिया गया। और जहाँ तक नेवी का ताल्लुक है तो हमने तो सुना था आपने नेवी मूव कर दी है। आपके इंडियन चैनल्स ने रिपोर्ट किया था कि नेवी मूव कर दी है, लेकिन नेवी तो आपकी भाग के 300-350 किलोमीटर दूर जाके छुप गई थी, क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने ये कसम खाई हुई थी कि आप आएंगे ज़रूर, जाएंगे नहीं, फिर आप डूबेंगे, अरेबियन सी के अंदर डूबेंगे वहीं पे। ये पाकिस्तान नेवी की कसम है। और आपको जब दिल करे, आपको जब यानी जोश आए, आप पाकिस्तान से पंजा आजमाई करने का सोच लेंगे तो आ जाइएगा। और अभी जो आपका हाल किया ये ट्रेलर था, फिल्म तो बाकी है, वरना आप भाग कर अमेरिका के पैरों में ना जाके बैठ जाते। आप आधी रात को मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरेबिया में फ़ोन्स ना कर रहे होते, यूएई को ना फ़ोन्स कर रहे होते कि हमें बचा लो पाकिस्तान से। फिर एंड में वही अमेरिका जिसने एक दिन पहले कहा कि यह भारत का पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उसको खुद बीच में कूदना पड़ा क्योंकि आपने इतनी मिन्नत समाजत की। और अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो CNN देख लें, उनके रिपोर्टर्स ने कितना खुलकर इस बात पर रिपोर्ट किया है कि आप लोगों ने मिन्नत तरला किया। और अगर CNN ने झूठ बोला है तो फिर तो हाथ कंगन को आरसी क्या, सू करें CNN को, सू करें इनके रिपोर्टर्स को। हम भी देखें, आप भी देखें। और वो क्या कहते हैं, नाच ना जानूं आंगन टेढ़ा। तो राजनाथ जी बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।